Good morning, Navoneel. Thank you very much for joining on our YouTube channel, and I'm really excited to start this session today because first thing जैसे हम लोग डिस्कस प्लान किए थे कि सेशन स्टार्ट करेंगे एंड जिन जिन टॉपिक का डिस्कस हुआ था, सो उसी दिन से आई एम रियली एक्साइटेड कि वेट कर रहा हूँ किस दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे Me इसको. too, me too. Yeah. Right. ओके एंड स्लोली अभी अभी थोड़ा मूव करते हैं कि थोड़ा टेक्निकल स्टफ और Why अभी not? अभी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे. सी वेरी बेसिक थिंग आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव वर्कड ऑन सो मेनी एप्लीकेशंस एंड सो मेनी थिंग्स that it's for all of our viewers. So we use a lot of gadgets nowadays. We use headphones, we use Mhm. laptop, we have Right. multiple laptops nowadays, right? We Mhm. use different email communication platforms, Mhm. right? Gmail, Yahoo. We use tablets. So Right. when we talk about these personal gadgets, nowadays lot of things are happening. कोई तो मुझे बीच बीच में रात 2 या 3 बजे जब मैंने सोता आई वाज ट्राइंग टू स्लीप तभी मुझे मैसेज आया कि somebody is trying to और दिस इज योर Access ओटीपी your फॉर योर Gmail. हाँ जीमेल ये होता रहता है पता नहीं कैसे होता है यार वेरी स्ट्रेंज वन सो हाउ टू safeguard ourselves from these kind of attacks Okay. for our Fine. Understood. personal devices actually. Yeah. चलिए लैपटॉप सब यूज करते हैं. Let's talk about mobile. How can you secure mobile has become a part of us, right? A कहीं part भी of us, जाते right? हैं फोन का चार्ज खत्म होता है तो लगता है अपना चार्ज खत्म हो रहा है कि जल्दी से इसको जिंदा रखो. Like टेंशन आ जाता है उसमें right, tension क्या हो क्या हो जाता है. जाएगा. हाँ Right, right. So मैं कुछ बताना चाहूंगा. And if you consider the length and breadth of Indian customer, mostly people use Android. So I'll first tell about Android. Few security measures that I take. I used to have an iPhone. Now I'm having an Android phone because of the features. I am moving away from Apple for some reason. So again, Apple is good brand. I'm not criticizing them. Correct. But I will tell you what I do in Android, right? So first of all, don't keep any app that you don't use. That's the most important, right? I that would be asset light on your hardware, that is your mobile, as well as you'll have a knowledge on what apps are there. Okay, and you don't have to think of updating everything. So always keeps the number of app that you use regularly, at least last 90 days में जो app use किए वो रखो. बाकी you can remove it. Now Jio का data, बाकी data are quite cheap. You have Wi-Fi, you can download anytime if you need. जब जरूरत हो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं. Right, exactly, right. Now there's a very interesting thing. Once we install application, it asks for permission. You might have seen. Call read permission, calling permission, message read permission, gallery read permission. You should not be like ये app चाहिए तो ये जो भी मांग रहा है मैं दे दूंगा. तो actually ये सब कुछ ले लेगा आपसे. Right? So you should be very much careful whatever it is asking. For example, it is an application that only shows your gallery, your pictures, and it is asking permission to read your text message, your phone call data. Correct. Not needed. You should see other application, or you should disallow this permission. If the app crashes, then you should remove that app. You should actually find alternatives if you are worried about privacy. Yeah, Navoneel, one thing, ये जो चीजें हैं ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है, राइट? कि अगर ये एप्लीकेशन है और ऐसा कुछ है कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर जो उसका फीचर के हिसाब से उसका एंड गोल जो होता है, मान लीजिए जैसे कि गैलरी, इट इज ओनली रिक्वायर्ड टू शोकेस योर फोटोज, वीडियोस एंड एवरीथिंग. इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज कर लो. कोई जरूरत नहीं कि इसका फोन कॉल से या आपका कॉन्टैक्ट से, ये तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन पीपल आर आस्किंग, द एप्स आर आस्किंग दीज परमिशंस नाउ. तो इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है मार्केट में या ये अपने हिसाब से ही आप अंदर जाके परमिशंस में डिसेबल कर सकते हो. ये तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो आप डेवलपमेंट करते हैं उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, भाई आप ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है बिकॉज नो वन नोज दैट व्हाट ये ऐप क्यों ये चाहिए होगा. ये फिर आई मीन सी, आपको जो गैलरी ऐप बेच रहा है, एक्चुअली यू आर नॉट पेइंग मनी, बट आपको दिया जा रहा है. दे हैव टू सर्वाइव, राइट? दे हैव टू जनरेट सम कैश फ्लो. So they might try to get your data. See, there is a very interesting thing. If you're not paying money to buy a product, then you are the product.
Right, right, exactly, yeah. That's a good note actually, yeah. हम लोग अगर पे नहीं कर रहे तो एक्चुअली हम लोगों को हार्नेस करके वो अपना पैसा जनरेट कर लेगा. They will find a way. I'm आपका पर्सनल फोटो वो लोग पब्लिक में लीक करके कुछ नहीं कर पाएगा. They will be behind the bars, right? They will not do it. But वो क्या कर सकते हैं? They will read your web histories. They will try to read your call logs. Many other things, right? I don't know. Many other things. Could They be, will find हाँ. some to generate some cash. आपका Cash GPS flow. लोकेशन देख के आपको ऐड दिखा सकता है कि हाँ आप फॉर एग्जांपल बैंगलोर में हो, आप जैसे कोरमंगला साइड जा रहे हो, it would take your GPS location and it would give you what is Restaurant, so happening right. all around, yeah, to trap you, right? So Correct. actually that's a trap. That's I a mean, trap, yeah. it could be your benefit or it could be your loss, but that's what Both, that's both. that's how they will sell the ads, right? So that's what, don't accept anything and everything they ask, right? जैसे हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोई कुछ भी मेरा घर का चाबी मांग लेगा, मैं थोड़ी दे दूंगा, नहीं दूंगा ना. हमारा Right. रिलेटिव होगा तो हाँ अलाउ करना है तो then only I'll give, else I'll not give, right? So we should be that careful with our data and privacy, specifically with our mobile phone, because that's what we use. Next thing is you don't have to install antivirus, because your Android app, I mean Android OS has antivirus. It's called Google Play Protect. Correct. You go to settings, then security, then you will see Google Play Protect. Correct. Click on it, do a scan. It would scan your device and tell you what are the, if you have anything malicious, if you Malicious, have right. anything fishy, and kindly do justice to that app, delete it or get something else. If you have developed that app, then fine. Like many times if we develop the app and we test on our device, तो उसमें we will not follow all the standards and all. It might show this is some, externally installed application and all. It might give you alert, so you can just ignore. Other than that, if anything you find fishy, delete it. It's not needed. If you want to compromise yourself, well and good, else you should delete it. Correct. Right now, the next important thing is update. You should update your device, right? Most of the major abhi jo bhi brands hai, they guarantees or kind of commits 3 major updates and security patches. So do it judiciously, because कुछ जैसे we know encryption, right? Mobile में data store होता है बहुत encryption way. I'm using many encryptions. Data communicate होता है using encryptions. For example, Android M, Marshmallow. उसके नीचे जो भी devices है, they support ECB encryption. Okay, ECB is not secured, not that secured, right? So if some application wants to give you protection, they cannot give you because of the platform dependency. Platform doesn't support AES. How they will give you protection? Correct. So make sure you use some device which is quite quite new, specifically device new ना हो, उसका OS at least थोड़ा new होना चाहिए, at least 1 or 2 down the whatever is currently trending. So that is very important. That's what, like, we should also think of, ये नहीं कि device चल रहा है तो चल रहा है, सालों साल यूज कर रहे हैं, पुराना OS हो गया है, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए. if you, because nowadays we see like everything we do via phone. UPI हो गया, मेल हो गया, OTP जो आ रहा है आपका वो भी फोन में ही आ रहा है. We are storing all the credit card, debit card details over there. So update the device. It's needed now, right? कपड़े भी थोड़ा पुराना होता है तो हम just show off करने के लिए नहीं, it's good to take something new. Exactly, right? Because आप जो 10,000 या 15,000 या 20,000 जो भी वर्क्स इन्वेस्ट करेंगे इस मोबाइल डिवाइस में कुछ, तो अगर वो नहीं होता है प्रॉपर्ली तो योर डेटा इज लाखों गवा लोगे भाई अगर हो गया आपका कल्याण. एग्जैक्टली. तो right? उस टाइम का जो बोलते हैं लेना का देना पड़ जाएगा वहां तक. फिर you will spend lot of money. That's exactly true. And for example, I will give another very famous vulnerability that came up. It was called strand hog. Okay, I'll again give the link. So it is also called task hijacking, right? So जो Android API 29 है, that is Android 10, Android Q जो है, उसके नीचे जो
आई मीन एंड्रॉयड 9 और 10 से वो फिक्स्ड है प्लेटफॉर्म में, बट उसके नीचे जो भी एप्लीकेशंस है उसमें ये वल्नरेबिलिटीज काफी ज्यादा था। उसमें क्या होता था, यू कैन ओपन एन एप्लीकेशन, आपको दिखेगा ये फेसबुक ही तो दिख रहा है, मैं फेसबुक ही खोला हूँ, बट आप में एक मैलिशियस ऐप अगर लोड कर दिया जाए आपके फोन में, दैट वुड सुपर इम्पोज ऑन दैट ऐप, Okay. right? That can steal anything and everything from your device, that can give itself permission, right? For example, आप Facebook खोले हो, it is asking for your call, and Facebook is a trusted organization, तो आप उसको सारे परमिशन देते जा रहे हो, actually you are giving permission to a malicious app, Right. and if permission is there, Android platform would say yes, you have all the permission, take everything whatever you require, right? सो ये स्ट्रैंड हॉग वल्नरेबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मतलब एंड्रॉयड 9 और 10 से ऑलरेडी फिक्स्ड है, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही फिक्स्ड है, बट उसके नीचे देयर आर चांसेस ऑफ दिस वल्नरेबिलिटी। So उसका भी लिंक दे दूंगा, there's a very beautiful video which is caring and beautiful, because people, I mean, see, hacking is one of my mentors says, like, his name is Harshad, so he says like hacking is science and what he says, I forgot, okay, science and creativity, right? So how these hackers came to find such beautiful ways to hack, I mean, these are scary but these are beautiful ways, right? कितना intelligent हो सकते हैं लोग. So Right. I'll share the video link so people can have a view on that. So yeah, Okay. that is important. And another thing, हमारा फोन में चार्ज कम हो जाता है, हमको डर लगता है, हम कोई भी अगर वेयर ऑफर कर देते हैं, हम उसको थैंक यू बोलते हैं और फोन में लगा लेते हैं, राइट? We should not actually do that. There is another vulnerability, I mean attack called juice jacking. उसमें क्या होता है, जो तार होता है वेयर as well as that adapter can be a malicious device, जो आपका डिवाइस से डेटा पुल कर सकता है. So it's an external hardware malicious one. Charge, it would be a simple charger and an adapter. So Right. you'll think, yeah, everything is fine, what's wrong? But usme it is a customized device that looks like a charger. It would charge your phone. At the same time, it would It'll take steal the the data. Yeah. It's called juice jacking. So we should be very careful Right. on that. Right? Oh my God. अपना charger we should carry. At least adapter और तार तो कैरी कर लो. करेक्ट यार, रियली इट्स जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग सोचते हैं इसके बारे में, प्रोबेबली आप प्रोफेशन में हो, आपको लगता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट यू आर लर्निंग, यू आर एनहांसिंग योर स्किल्स, लेकिन जब आम लोगों के हिसाब से बात करें ना, एक लेमन लैंग्वेज से, इट्स रियली स्कैरी यार. अगर आप लाइव ऑपरेशन भी देख रहे हो तो उतना डर नहीं लगेगा जब आप सोचोगे कि दुनिया में क्या हो रहा है. आप घर बैठे हो, लाखों रुपए ऐसे ही जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आप देखते रह जाओगे लेकिन सब कुछ चला जाएगा. दैट्स हॉरिबल वन.